Shifting our attention to breaking updates coming in of a political controversy that has erupted in Maharashtra following the remarks by the MNS chief Raj Thackeray. Ahead of the BMC polls, Thackeray targeted the BJP leader K. Annamalai, mocking him as Rasmalai and questioning his right to speak on the matters in Mumbai. In his speech, Raj Thackeray also invoked his late uncle Balasaheb Thackeray's controversial slogan, which is a clear jibe at South Indians. Referring to Annamalai's remark calling Mumbai a global city, Thackeray warned of conspiracies to sideline the Marathi people. Listen in. कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. My colleague Nilesh Shukla joins us on the broadcast with the details. And Nilesh, the stakes are high in the BMC polls. Yes, but this is a racial slur that has very clearly been used by Raj Thackeray, and it's a very grim reminder of a very, very worrying and telling episode from Mumbai. Village Pratibha, as the state of Maharashtra is inching forward for the municipal corporation election, words or war of words is only intensifying. Raj Thackeray is known for his hard-hitting words, but this time he has crossed the limits, not only making derogatory remarks but also abusive words against Annamalai. He happens to be stating that what connection does Annamalai has with Mumbai or Maharashtra, that he is reaching out for election and ultimately demeaning the Marathi Manus Asmita or the Marathi Manus pride here onto the soil of Mumbai. Earlier it was Annamalai who had stated that Mumbai should not be limited with an eye of Marathi or Hindi or just connected with Maharashtra, but it should be a global city, and which is why infrastructure and other development work should be focused at a larger scale. Not speak about the issues of the people, isn't it? Nilesh, just a moment, I want to introduce Anand Dubey of the Shiv Sena UBT on the broadcast with us. And Anand Dubey ji, do you agree with this statement? This is your ally, Raj Thackeray, making these statements, which is very clearly a racial comment. गुड मॉर्निंग. देखिए, विषय ऐसा है कि अन्नामलाई जी 4-5 दिन पहले मुंबई में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे जो शहर है ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय है. तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो पहले मुंबई को बॉम्बे कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का शहर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है. कहिए कि यहाँ पर पूरे देश विदेश के लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते, कोई बात नहीं. तो लेकिन ये महाराष्ट्र का है ही नहीं. अगर उस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्शन है तो उस स्टेटमेंट की बात कीजिए. मैं बात कर रही हूँ जो राज ठाकरे जी ने कहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी एंटी साउथ इंडियन सेंटिमेंट एंड वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन मुंबई बिफोर. डू यू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? नहीं, अब उनका एक स्टाइल है बात करने का. वो अन्नामलाई की जगह उन्होंने रसमलाई कह दिया है. बट सिर्फ रसमलाई नहीं कहा है, और भी उन्होंने कहा है. और ये जो वो बालासाहेब ठाकरे जी की जो बात कर रहे थे, जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, उसके बाद वी ऑल रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन मुंबई. डू यू वांट टू सी सच वायलेंस, सच सेंटिमेंट्स अगेंस्ट साउथ इंडिया अगेन इन मुंबई? वी आर नॉट सपोर्टिंग टू एनी वायलेंस. हम वायलेंस के समर्थन में कभी नहीं है. अब उन्होंने एक बात करते करते कहा है और उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा है. वो अपनी उनकी थोड़ी स्टाइल है बात करने की. उनका 20 साल का जो भाषण आप देखिए वो ऐसे ही होता है, बिकॉज वो हिंदू के बस बात करने का स्टाइल तो नहीं है ना आनंद दुबे जी. एमएनएस के कई नेता हैं जो जाके लोगों को मार पीट देते हैं. ये उनके कहने का स्टाइल बस नहीं है, ये उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके एग्जीक्यूट करने का भी स्टाइल हमने देखा है. नहीं, देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ उसको अपने एक प्रसंग से जोड़ के देखिए. ये कोई हिंसा फैलाने या नफरत की बात नहीं है. आप मुंबई में आइए, स्वागत है आपका, लेकिन आप कम से कम इतना भान रखिए, इतना संवेदना रखिए कि किसी को हर्ट ना हो. तो उन्होंने अगर पूरे महाराष्ट्र को ही हर्ट कर दिया है तो थोड़ा सा तो उनको बोला गया है. बाकी इससे ज्यादा इस विषय को मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा तूल देना चाहिए. Okay, so you are saying that you don't support the statement, but he said these statements because that's his style of speaking. Anand Dubey ji, thank you for joining us on the broadcast. But you're trivializing what Raj Thackeray actually went on to say, because this is not just a racial attack.
and an anti-South India mindset. It's not just about calling Annamalai Rasmalai, but he also went on to bring back some of the statements of Balasaheb Thackeray that led to violence in Mumbai. And I'm sure that people of Maharashtra don't want to see that again. In fact, Uddhav Thackeray has also reacted again, not calling out Raj Thackeray, but instead calling out Annamalai for saying Mumbai is an international city. Listen in. आणि तो अण्णामलाई आला त्याला मला खास धन्यवाद द्यायचे. का धन्यवाद? कारण तो नकळत बोलून गेला. भाजपच्या मनातलं जे काळं आहे तो ते बोलून गेलेला आहे. असंच ज्या वेळेला लोकसभेच्या सुमारास. So why is there so much anger? Let's talk about that. One statement of Annamalai has triggered this entire controversy. The Uddhav faction, which is an opposition in Mumbai, has slammed the BJP of spreading divisive thinking in Maharashtra. What is this comment that they're talking about? Here is what the BJP leader Annamalai said. Here we are looking at the only city in our country where a triple engine Sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. Chennai's budget is 8,000 crore. Bangalore is 19,000 crore. You need good people sitting in the administration to manage the finance, to manage development. So Annamalai was talking about the significance of Mumbai and how it can be a powerhouse for not just Maharashtra, but for the entire country as well. And that is what triggered the entire controversy. Nilesh, my apologies. We'll have to leave it at that with so many political reactions coming in. But thank you for getting us that update. With that, it's time for us